Namaste everyone. I think you guys are waiting for long to hear the person. He's the charm on the debates and TVs whenever you see him. He's a MP from Rajya Sabha. His constituency is Lucknow, UP. He's from UP, Lucknow. He's also a national spokesperson of BJP. He has done his PhD on mechanical engineer. He's a political advisor to Bharatiya Janata Party's president. He's also part of the member in different committee of the parliament, like a defense, energy, ethics of public accounts committee. He's also leading something that new for the world is called data protecting bill. He's also leading that one and he's an advisor on that. I want to welcome Shri Sudhanshu Trivedi to come on stage. His depth on the history is phenomenal. Welcome, Sudhanshu. यहाँ सभागार में उपस्थित इंचार्ज ऑफ द ओवरसीज अफेयर्स ऑफ बीजेपी डॉक्टर विजय चौथाई वाला जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मितेश भाई पटेल जी, all respected brothers and sisters present in this august gathering, and above all आज के अधिष्ठान की उत्सव मूर्ति Dr. Bharat Barai. We have all come together to pay our respect to him. But one thing emerges in my mind, because as Neerav Bhai told you that I came from Lucknow, which is the area is called Awadh, the area of Bhagwan Ram. And when you come from the area of Bhagwan Ram, your affection towards Bharat ji has to be enormous. And you know who was among the four brothers of Bhagwan Ram, who was dearest to Bhagwan Ram? What is the proof? These days, Hanuman Chalisa is very much there in vogue in India, for obvious reasons. But in Hanuman Chalisa, Tulsidas ji has written, when he was saying, Ramchandra ji was saying to Hanuman ji, Raghupati kini bahut badai, tum mam priya Bharat hi sambhai. Means, he has praised a lot to Lord Hanuman that you are dearest to me like my dearest brother Bharat. But going to on a deep philosophical note, I would like to say that all the concepts of Hinduism are not just stories. They are having a deeply coded, embedded philosophical, spiritual and conscious formulas. Have you ever thought of why Bhagwan Ram were four brothers, not 3 or 5? And why Bharat ji is dearest to Ram, not Lakshmana, who has went with him to the Vangaman? You know, the fact is, the number 4 of the 4 brothers is because everything happens within us. That is a story of consciousness. It's not a story. When Bhagwan has taken incarnation, he has embodied each and every aspect of consciousness in his life. तो 4 भाई जो हैं, वो 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं. भगवान राम धर्म के प्रतीक हैं, शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक हैं, लक्ष्मण काम के प्रतीक हैं और भरत मोक्ष के प्रतीक हैं. अब आप ये देखिए, इसीलिए why लक्ष्मण has gone along with भगवान राम to जंगल. वो काम यानी कामना के प्रतीक हैं,
काम कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, उसे सदा सर्वदा धर्म के साथ रहना होगा, तभी सन्मार्ग पर रहेगा। भरत जी ने खड़ाऊ रख के जो तपस्या की वो मोक्ष के प्रतीक हैं। तो मोक्ष कब मिलेगा? धर्म के किसी भी एक प्रतीक को आप सामने रख के तपस्या करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और शत्रुघ्न अयोध्या में ही रहेंगे, क्यों? अर्थ कभी राजधानी छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए अर्थ को सदैव वही रहना। क्या बात है। तो ये चारों भाइयों का जो कहने का भाव है, और अब मैं यहां पे आता हूं, एक एक चीज का अर्थ है। भगवान राम किसके प्रतीक है? हम सब ने राम मंदिर की बात तो हम सब ने कही, और आज आपने देखा कि परिस्थितियों में बदलाव आया, और ऐसा बदलाव आया कि राम मंदिर जिस प्रकार से बन के खड़ा हुआ, मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूं। बहुत सारे टीवी डिबेट्स में जाते थे, लोग कहते थे हाँ अब तो बीजेपी वाले बहुत बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो हमने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कोई तारीख नहीं है, डेट नहीं है। दिस इज एन टाइमलाइन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ राइजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया। हाउ कम? अगर आप में से कुछ लोगों ने स्टडी किया हो राम जन्मभूमि के केस को, तो फर्स्ट ऑफिशियल एफआईआर which was lost in Ram Janmabhoomi case was in November 1858। और उस एफआईआर में मजेदार बात क्या है, फैजाबाद के थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 50 निहंग सिख खा गए हैं, और उन्होंने आके कब्जा कर लिया है, यज्ञ हवन किया है, और दीवारों पर राम राम लिख दिया है। किसकी दीवार पे? वो अपनी एफआईआर में लिख रहा है मस्जिद जन्म स्थान। वही मस्जिद की ठीक है, जन्म स्थान किसका था? अब देखिए ये कब हो रहा है? नवंबर 1858, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसी के साथ सिंक्रोनाइज होकर चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडिया के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से के बाद जो फ्रीडम का मूवमेंट का धीरे धीरे 1885 में कांग्रेस बनती है, एक मूवमेंट धारण करता है। फिर 1905 में तिलक जी पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। बट द नेक्स्ट बिगेस्ट हिस्टोरिकल वाटरशेड पीरियड केम इन 1937, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, सेंटर में ब्रिटिश की थी। 1936 में ही बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, और उसके बाद वहां पर नमाज पढ़ने की अनुमति समाप्त हो गई। अब आप आइए, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली ड्राफ्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, और दिसंबर 1949 में वहां भगवान राम प्रकट होते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। देखिए टाइमलाइन, इंडिपेंडेंस हुआ, भगवान राम प्रकट हुए। देन राम मंदिर मूवमेंट फ्रॉम 89 to 92, यही वो दौर है जब इंडिया में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, इंडिया की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर होती है, और इंडिया का ट्रू पोटेंशियल उभर कर सामने आता है। Then the next significant event of Ram Mandir movement was 30th of September 2010, when Lucknow bench of Allahabad High Court has given a judgment that sanctum sanctorum belongs to Shri Ram Lalla विराजमान। यानी ये हो गया कि गर्भगृह भगवान का ही है। ये 30 सितंबर है, और जाके चेक करिएगा, अक्टूबर 2010 बैरक ओबामा goes to India and addresses the joint session of parliament, and he first time says India is not emerging, India has emerged. For the first time, US president accepts। और फिर आपने देखा जब जजमेंट आया 2019 नवंबर में, और 2020 में जब प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, तो जब भारत की वास्तविक इमरजेंस होनी थी, यानी भगवान राम के मंदिर की पताका और भारत के महानता की पताका एक साथ उठनी थी, ये तारीख नहीं थी, ये कालचक्र की गति थी, इसे समझने की आवश्यकता है। और मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूं, कभी कभी छोटी चीजों में हमें ध्यान नहीं रहता है कि इस चीज का मीनिंग क्या था। मैं थोड़ा सा विषय में जाके सिर्फ एक बात बोलूंगा कभी, कि कभी आपने ध्यान दिया था कि रावण के 10 ही सिर क्यों थे? 10 या 15 या 20 क्यों नहीं? 5 या 15 क्यों नहीं? और एक सर कटता था, दूसरा क्यों उगाता था? ये कोई कहानी नहीं थी। और अगर 10 सर भी थे उसके, तो उसका नाम 10 शीश भी हो सकता था, यानी 10 हेड्स।
Dash Grieve, 10 necks. Dash Kandar, 10 shoulders. Dashodar, 10 stomach. Why Dashanan, 10 mouths? Why? Actually में everything happens inside us. 10 के फिगर का मीनिंग है 10 हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं. And Dashanan, 10 इंद्रियों का खुला हुआ मुख means the extrovert tendency of all the 10 senses is the thing which is embodied in Ravan. And whenever one head is cut, it is immediately get replaced and God cannot replenish it. It means you fulfill one desire of any of your indriya, it will immediately get replaced by another desire. It is unending process. But finally, who will destroy it? Ram. Ram is what? Divine element. And how he will come to the world? What was the name of the father of Ram? Dashrath. जब 10 इंद्रियों को रखने की क्षमता आती है तो हृदय में वो डिवाइन एलिमेंट पैदा होता है जो 10 इंद्रियों की एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी को नष्ट करता है, तब धर्म की स्थापना होती है. तो इसलिए मैं कह रहा हूं राम मंदिर भी तब बनना था जब धर्म की स्थापना होनी थी. Now we are all talking about Vishwa Hindu Parishad. So first I would like to say, when we are standing here in Chicago, then we must be more concerned about how the Vishwa is connected to Hindu. Because if you look at America, there is a connection of destiny, because US was discovered by Columbus by accident when he was trying to find out the way to India. That's why the natives of this country are still today called Red Indians, and there is West Indies. So that's what the connection with India is having, and this is the connection on the West. And for the first time, when emergence of India having something in the eyes of West started in 1893 here in Chicago, when Swami Vivekananda has given his famous deliverance. But विश्व का हिंदू से संपर्क से इतना नहीं है. ये तो हम far west में. You go to far east. In Japan, there is a goddess. The name is Byzantine, and you know that goddess is the goddess of wisdom. She sits on a lotus, having veena in her hand. तो देवी सरस्वती का ही वो रूप है. You know, Indonesia. What is the meaning of the word Indonesia? Nisia is a Greek word which means island, and Indonesia is Indian island. And you know, the capital of Indonesia is Jakarta. Its original name was Jayakarta. And still today, you go and search on internet, you will find there were 2 provinces in Indonesia, Jayakarta and Yogyakarta. Still, the adjacent province of Jakarta is Yogyakarta by the same name, Yogyakarta. That is the connection of Vishwa with Hindu. And if you look at the Hindu society, the only, if you consider it as a religion, कभी आपने सुना है कि किसी रिलीजन का भगवान दूसरे उस धर्म को न मानने वाला भी कह रहे ये मेरे भगवान है. If I ask you, name a single country in the world whose king still holds the title King Rama. It is Thailand, it is not a Hindu country. If I ask you, name a single country in the world whose first lady still says that they are the descendants of Bhagwan Ram, it is South Korea, and if you go and check, 60% of them say they are atheist, but still connected to Bhagwan Ram. And if I ask, name a single country in the world on whose national broadcaster every day Ramayana comes, it is the biggest Muslim country in the world, that is Indonesia. तो कभी आपने सुना कि दूसरे धर्म के मानने वाले लोग भगवान में, in the entire Europe and America, Hare Rama Hare Krishna movement, it was neither and never engineered, sponsored by any of the Indian government and nor by any Indian establishment. It came up on its own. तो cutting across the line, ये हमारा स्पेस में, यानी पूरे वर्ल्ड के ग्लोब के ऊपर जब हम कहते हैं विश्व हिंदू, तो विश्व इतनी आसानी से समझने वाली चीज नहीं है. विश्व में प्रभाव हमारा बहुत व्यापक है. और when we talk in scientific terms,
So talking about only space is not sufficient. Time should also be under consideration. So, I will not take more time, but I would like to remind that in time frame, all other religions of the world, what say? Someone says that the earth was created 14,000 years back. Some say 30,000 years back, at the most 37,000 years. None of them even thought of 1 lakh. And as per our calculations, this new year, which we have just passed through, is 1.97 billion years of Brahma Samvat. So our timeline goes to billions, and in this context I would like to remind, you might have heard the name of Carl Sagan. He was one of the noted cosmologists who has devised the code on Voyager, which is the first man-made object gone beyond the solar system. He has said only the ancient cosmological calculation of Hindus matches with the modern scientific cosmological calculations. और ऐसा भी नहीं है. If we talk about a universal thing, so we are truly universal. क्योंकि हमारे जो पर्व हैं, वो केवल ऐसे नहीं होते कि कोई एक इवेंट था उसकी खुशी में मना रहे. The biggest Hindu event is Kumbh, which brings the biggest gathering on earth on one day, 2.5 crores, when the Mahakumbh in Prayag. And you know how it occurs? ये जुपिटर ग्रह के 12 साल की साइकिल के साथ, जब जुपिटर जैसे प्रयाग में होगा तो मेष राशि में होगा, सूर्य चंद्रमा वृष राशि में होगा, सूर्य कर्क में होगा, मींस a configuration of planets in a particular pattern, then that event will take place. और आज after the NASA's physical observatory everything, the entire calculation comes accurate, not only to the day, not only to the hours, but to the minutes. Nowhere in the world you will find a religion जिसका यूनिवर्स से भी कनेक्शन हो. और हम तो वो हैं जो आकाश से भी गंगा उतारी थी, नक्षत्रों पर भी संज्ञा दी थी, और सागर पर भी सेतु बनाया. मगर अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अपनी शक्ति भूल जाते हैं. I remember after post demolition, when the election happened, and in UP we were unable to form the government, when SP-PSP came together, so there was a political slogan which was raised there, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम. So उस समय उन्होंने कहा था ये इसलिए हुआ because you are not able to put up a proper unity and proper strength. और जिस दिन वास्तविक शक्ति दिखाओगे तो वो दिन आएगा क्या मुलायम का काशी राम सारे बोलेंगे जय श्री राम. और थोड़ा थोड़ा दिखने भी लगा है. अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, तो इसलिए हम सिर्फ कहना चाहते थे कि जब हम ये सोचते हैं कि हाउ द थिंग्स विल चेंज, तो व्हाट वी हैव टू थिंक. मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहूंगा हमें क्या करना. चलिए बहुत अच्छी बात थी, ये हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा था, हमारे पास नॉलेज बहुत अच्छी थी, हमें क्या करना है. अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कुछ कहावतें होती हैं, देयर आर सर्टेन प्रोवर्ब्स व्हिच आर वेरी मच यूज्ड, और हमें ध्यान ही नहीं रहता ये प्रोवर्ब क्या था. जैसा अभी बोला गया वसुधैव कुटुंबकम, it is only in Sanskrit. In English if you ask what is the global market, it is not कुटुंबकम. एक और चीज आपसे कहता हूं that you have heard about one proverb, everything is fair in love and war. और फिर इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, जंग और इश्क में सब कुछ जायज है. एक इंग्लिश है, एक उर्दू है. कभी भी संस्कृत या भारतीय भाषा में कभी सुना है कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित है? ऐसा कोई कहावत नहीं. Because the language also inculcates your culture. हमारे यहाँ प्रेम त्याग का प्रतीक है और युद्ध में धर्म है, इसलिए कहीं पर कुछ जायज नहीं है. इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा. अभी जो बोला था वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब मीन्स फैमिली, and what is a global market. So when you have to deal with market, use English, and deal with the family, try to have
as far as possible, at least some pinch of Sanskrit. And यह भी ध्यान रखिए कि we are the only, if anybody considered a religion, we are the only religion in the world which is having no concept of conversion. That's why India is the only major country in the world which never went for invasion. And we are the only surviving civilization of the ancient world. और इस पे आज पुरानी all great civilization from China to Mesopotamia to Greece to Iran to Baghdad to Roman Empire to Inca, Maya, Aztec, here everybody has become the part of books in history. But we are the only living civilization. जिसके लिए अटल जी की कविता की एक पंक्ति थी कि दुनिया का इतिहास पूछता ग्रीक कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान. And lastly, I would like to say that whatever the process going on under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, a new era is now emerging. और वो एरा के लिए जरूरत क्या थी? लास्ट में फिर आता हूं हनुमान चालीसा पर ही क्या कहा गया? सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा. वो कौन राजा ले जाएगा? जो तपस्वी हो. इस समय तो राजा तपस्वी है ना. इसलिए फाइनली rise of India should not be a threat to anybody in the entire world, because we do not want to become the superpower or the most powerful nation in the world. We want to become Jagat Guru. What is the difference between a powerful man and the Guru? If you are standing by the side of a powerful man, you feel a little bit hesitant and sometimes a little bit awful. But when you are standing by the side of Guru, you feel exalted, elevated and enlightened. So we want to motivate the world, not to dominate the world. इसलिए अटल जी की पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं. बहुत पुराने लोगों को याद होगा, बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय. तो उसके दो छंद आपको बताता हूं, इसमें पूरा सब्सटेंस है. वी आर द ओनली, इफ यू कंसीडर रिलीजन इन द वर्ल्ड, जिसकी रिलीजियस बुक में मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स, जिसके रिलीजियस बुक में मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद. तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने जब ये कहा था कि हमारा परिचय क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभमय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय. और लास्ट में एक चीज मुझे और ध्यान आगे बढ़ा देना चाहता हूं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात होती है, यू नो, हम ये कहते हैं कि सीवी रमन पहले इंडियन थे जिनको फंडामेंटल साइंस का नोबेल प्राइज मिला, बट दिस इज हाफ ट्रूथ. सीवी रमन वाज द फर्स्ट non-white and non-European to get any Nobel Prize in the fundamental science, and he was Hindu. And आज अगर आपसे पूछे 21st century की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज अभी तक की क्या है, which is the biggest scientific discovery of 21st century up till now, 2022, it is the God particle which was found in July 2012 in the CERN laboratory of Europe. And the name of the God particle's scientific name is Higgs boson, and it is based on the name of the two scientists who have given initially the concept of this, one Peter Higgs of England and Satyendra Nath Bose of India. तो वहां भी हमारे हस्ताक्षर हैं. इसलिए अगर ज्ञान है तो we are the only country which can provide the knowledge or way to both God and particle.
others can claim only for one thing, either God or particle. We will provide God and particle. और फाइनली वही लाइन कहकर समाप्त करता हूँ कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने किसी को डोमिनेट नहीं करना, हमें तो दुनिया पे कब्जा नहीं करना है, हमें अपने हृदय को, अपनी इच्छाओं को जीतना होता है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। Sudhanshu, we want to say a few more words. We are requesting, please be here. A lot of people have a question. If they can write down, we can take 5 questions. If you can write down, Sudhanshu ji is the right person here to answer that. So please go ahead. And till then, I would ask Sudhanshu ji to continue his work. Please have patience. The first question is, Sudhanshu ji, from your speech. The Hindu land used to be from Iran to Indonesia. Now it has dropped down to just 20 states of India. What is the future of Hinduism in Bharat? Or 20 states. There are more than 20 states, but there are only 20 Hindu states. As Please. बस ऐसे समझ लीजिए कि आपने बिग बैंग थ्योरी सुनी होगी ना, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर उसके बाद एक्सपेंशन होता है। तो चिंता मत करिए, जो मैंने कहा हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूल गए थे, अब शक्ति याद आ गई है, तो सागर भी पार होगा, छलांग भी लगेगी और फिर वो सारी चीजों में स्वीकार्यता पुनः बनेगी। The second question is, what do you think of the current Kashmiri Hindus after the movie Kashmir Files? I think you must have watched the movie. Will they be able to, in fact, get their homes? Will there be Hindus back in Kashmir? In this context, I would like to remind one thing. 10 years back, I got an email from US, somebody has sent, when the movie My Name is Khan has come. And it is written in that email, my name is Kaur, I am not a Khan. So, nobody will hear about my pains, my suffering, and I am not having any hope that any time in India, my name is Kaur and Kaur will be heard about. But वक्त बदला है, निज़ाम बदला है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में मोदी सरकार नजर आते हैं, तो कम से कम अब उस दर्द की अभिव्यक्ति भी हुई है। पर मेरा मानना है उस दर्द की अभिव्यक्ति को अपनी शक्ति बनाइए and move ahead for major transformation. Please take your seat, please. You can please have a few more minutes. The next question is very tricky question. Is the BJP government going to consider defining what a minority is? There are minorities less than 3% composition. They are not defined as minority. So when are we going to have a definition of minority? वैसे तो there is no constitutional definition, but वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताते हैं जो हमारे And the last question, when will the change in history books, not change, I'm saying correction of the history will be made, so our next generations are not fed the same lies. I'm going to be gentle. दिमाग में नहीं बोलना, मैंने मना किया. Process is going on. Hopefully, by the beginning of the next year, it will be completed. But history of lies पे एक बात कह दूं, चूंकि अब हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं ना, तो खाने से ही खत्म करता हूं history of lies का. We have all heard about the Mughlai dishes, and the most common Mughlai dish is biryani.
And it is being told that the Mughals got it. But if I ask you, which is the main constituent of biryani? Rice. Rice कहाँ होता है? जहाँ सबसे ज़्यादा पानी बरसता है. इवन वेस्टर्न इंडिया में नहीं होता है. ईस्टर्न इंडिया में जहाँ हैवी रेन्स होते हैं वहाँ पानी होता है. जहाँ एक बूंद पानी नहीं गिरता था वहाँ राइस कहाँ से आया? अब आप आइए. सेकेंड मेन कंस्टिट्यूएंट इज फैट, घी. फैट कहाँ होता है? जहाँ एक्सेसिव मिल्क हो, मिल्क से बटर एंड बटर से क्लियर मिल्क बनेगा. जहाँ दूध ही नहीं होता था वहाँ घी कहाँ से आया? एंड थर्ड कंस्टिट्यूएंट इज मसाले. एंड इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड दैट द स्पाइसेस वर ओनली इन इंडिया एंड द एंटायर ट्रेड वाज मोटिवेटेड टुवर्ड स्पाइसेस. तो भाई मसाले का मां नहीं था, चावल का चा नहीं था, घी का खा नहीं था, पर बिरयानी आपने बनाई, हमको खिलाई और हमने मान ली कि आप ही ने हमको खिलाई. अब उसको करेक्ट करिए और आप मुझे लगता है भोजन करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, धन्यवाद.